some soft in his mouth and nose and ears. Okay, and one thing is that and Sultan was there and like crying, don't crying. Sultan was do not crying. Okay, Sultan was do not crying. Sultan was do not crying. When I saw Sultan, why Sultan you are not crying for him? And he says that please keep quiet. My grandfather is eating. लच्छा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. My grandfather is eating लच्छा. Okay? अस्सलाम वालेकुम गाइस. आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ. और बताएं कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खुश हैं? यार मैं आज व्लॉग बनाने क्या आ गया यार. ये जगह है एक एयरपोर्ट के पास ना, एयरपोर्ट के पास बड़ी ज़बरदस्त जगह है. मतलब देखना बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही मतलब हैवी है यहाँ. ये स्पोर्ट्स एरिना है, गरीजन स्पोर्ट्स एरिना है. तो इसमें मतलब लगे हुए हैं वो बैरियर्स लगा है, वो गोल बैरियर लगा हुआ है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया व्लॉग बनाने. तो वो वहाँ पे ना वो मैंने कहा चलो मैं ना चक्कर लगाऊंगा वहाँ पे, वो सामने मैं चक्कर लगाऊंगा. तो सारा एक चक्कर लगाऊंगा और एक वीडियो बना लूँगा. बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो बन जाएगी. लेकिन मैं तकरीबन 5 से नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट बैठा हूँ. तो वहाँ पे 10-15 लोग आ गए, वो अगले वॉक करने आ गए. हालांकि बनाई उन्होंने उनके वाक़े लिया, मैं भी बच्चे चलाता मारता पाया. ठीक है, तो आज मुझे थोड़ा सा एक ना शैतानी सी जाग रही है. मुझे शैतानी ये इसके बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट है. ठीक है, बिल्कुल पीछे एयरपोर्ट है. मुझे आज एक हल्की सी शैतानी सी आ रही है. शैतानी क्या आ रही है? शैतानी ये आ रही है, बंदा मेरे मुँह आ रहा है पर ऊपर में जा रहा है, मुझे लगता है वीडियो बनाना पे, मुझे तो बताइए. ठीक है, शैतानी ये आ रही है कि जो हमने उस दिन जुगते मारी थी ना, वो जो हमने उस दिन जुगते मारी थी, वीडियो बनाई थी मैंने और सुल्तान ने जो वीडियो बनाई थी, आज मैं उनको इंग्लिश में जुगते मारेंगे. उनको ही ट्रांसलेट करूँगा और कुछ जो मतलब मुझे आती हुई वो मैं इंग्लिश में आपको सुनाऊँगा. अच्छा, तो उसने कुछ जुगते मारी थी, मतलब मैंने भी जुगते मारी. मैंने तो ये जुगत मारी थी कि और रुई वगैरह लेके और वो उसके दादा अबू के उसमें कान नाक में हर जगह देखे. तो उसको वो फिर कहता है कि अब्बा अच्छा खा रहा है. मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, बस नॉर्मल है, इतनी हैवी इंग्लिश नहीं है मेरे को आती. सो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट मिक्सअप किया, इतना याद तो नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो जुगते हमारी थी, कुछ याद है, कुछ बोल रही है, कुछ याद है. उनमें से एक तो ये लच्छे वाली थी. लच्छे वाली मैं आपको अपनी वाली की इंग्लिश बताता हूँ. लच्छे वाले की इंग्लिश ये थी लाइक वंस ठहरो, पतलू वाली जी ऐनक पा जो पतलू ऐनक पा के वीडियो बना. ओके, तो वंस अपॉन अ टाइम my grandfather was died and like my grandfather was died and nana दादा नहीं grandfather दोनों इंजी कहते हैं. grandfather was died and he was lying on like मंजी किन्हों कहते हैं on फटा. Okay, so and some soft in his mouth and nose and ears. Okay, and one thing is that and Sultan was there and like crying, don't crying. Sultan was do not crying. Okay, Sultan was do not crying. हाँ सही है, Sultan was do not crying. When I saw Sultan, why Sultan you are not crying for him? And he says that please keep quiet. My grandfather is eating. लच्छा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. My grandfather is eating लच्छा. Okay. अब सुल्तान वाली जुगत पे आते हैं. सुल्तान ने बड़ी मारी थी उस दिन. सुल्तान की कुछ मुझे याद है. ठीक है, हाँ. वंस अपॉन अ टाइम मुझे मारी थी, मैं बता. वंस अपॉन अ टाइम आई फिश
my fish is like cooked in my house, and too much soup in that fish, okay, and too much soup in that fish. That's why Sultan and me asked to Sultan, Sultan, how do you pick this fish up? And I said, so Sultan said, and I said that I picked that from river, okay, and I said that Sultan said that it's your bravery that you pick this from the river, okay. I can't pick this from this kauli, kauli bowl, okay. I can't pick this up from this bowl. हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है. एक और जुगल सी Sultan, हाँ Sultan, once upon a time there was a fish cooked in Sultan's house, and I go there to eat fish. He invited me to come to his house and eat fish, okay, and when I goes there, and Sultan give me the bowl of a fish. There was so much soup and so much potatoes in that fish, and then because that's why I stand on two potatoes over there, and then pick that fish from them. Oh. इसकी आपने मुझे उर्दू बतानी है, इसकी उर्दू क्या कमेंट तो देखो. और अगली ये थी सुल्तान ने ही लगाई थी, सुल्तान ने आखिरी वाली लगाई थी. हाँ सुल्तान सैड कहना नहीं, सुल्तान तलाल दा दादा मर गया, दादा मर गया तो रोया ही नहीं, तो जो मुर्गी मर गई उदों बड़ा रोया. मैं पुछना तेरा दादा मरिया सी उदों तो रोया नहीं, जो तेरी मुर्गी मर गई उदों तो रोन लग गया. तो सुल्तान फिर मैं क्या कहना, ਉਹ यार ਉਹ दादा ਤੇ अंडे नहीं, मुर्गी ਤੇ अंडे ਦਿੰਦੀ ਸੀ, दादा ਕਿਹੜਾ अंडे ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ. Okay, so Sultan, once upon a time my hen was died, and I was not cry too much, okay, I was cry too much on hen. हाँ मैं मुर्गी मरने पे ज़्यादा रहा. But when my grandfather died, and I do not cry too much. Sultan asked me that why you do not cry for your grandfather, and you cried for your hen too much. And I said that my hen was laying much eggs for me, but my grandfather don't lay any eggs for me, okay. आप लोगों ने मेरे को मैंने इंग्लिश नहीं की, ठीक है. तो कल फिर हम इस पे बनाएंगे कि इंग्लिश वाले जुगते मारेंगे एक दूसरे को, ठीक है. तो दिन चढ़ गया माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, देखें बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, लोग आ रहे जा रहे हैं, ठीक है. हेलो हैवी बाइक चेक करो जा रहे, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है. तो 10 मिनट का व्लॉग हो गया, आज थोड़ा लंबा हो गया. आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़.